तो क्या आप कैलकुलेटर यूज़ करते हैं या क्या आप मेंटल मैथमेटिक्स कर सकते हैं? अगर कोई फिगर है 16,840, इसका 12% क्या होगा? बहुत इजी है, एक नंबर हटा दीजिए 10% रह गया, दो नंबर पिछले हटा दीजिए वो 1% रह गया, तो 10 + 1 + 1 क्या हो गया? 12%। बट हर कोई इसमें अच्छा नहीं होता क्योंकि हम ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं कैलकुलेटर से, और यहीं से आज के क्यू कार्ड की तरफ चलते हैं। टॉक अबाउट अ टाइम व्हेन यू हैंडल अ लेंथी कैलकुलेशन विदाउट अ कैलकुलेटर। कैसे कैसे क्यू कार्ड्स पूछ रहा है आईडीपी या आई वुड से आईएल्स। तो अब इसके लिए आपके पास स्टोरी क्या है? मेरी स्टोरी बहुत सिंपल है। ऑफ कोर्स स्कूल टाइम से रिलेट करेंगे। एक टेस्ट हुआ जिसमें आपको काफ़ी कुछ था, मेंटल एप्टीट्यूड था और उसी में एक सेक्शन मैथमेटिक्स का था। आप शुरू से ही कैलकुलेटर की हैबिट में हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, ऑन द गिवन डे आप कैलकुलेशंस नहीं कर पाए, बहुत लेंथी थे, बहुत आपका दिमाग ख़राब हुआ, आपका बहुत टाइम वेस्ट भी हुआ, लेकिन फिर भी करेक्ट मैचेस आप नहीं कर पाए। और आफ्टरवर्ड्स यू रियलाइज़ कि कितना इम्पॉर्टेंट है टू बी गुड एट मेंटल मैथमेटिक्स। और इसी चीज़ को आज के क्यू कार्ड के सैम्पल में मैं आपके लिए कंप्राइज करने जा रहा हूँ। अगर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिलेटेड टू द वर्ल्ड ऑफ IELTS on this particular channel only. Let's begin this sample. Well, it's hard to find people these days who are good at mental mathematics because a vast majority is completely dependent on machines for calculations. Here, I would like to share one such incident when I was in great trouble as I couldn't handle the calculation because I was not using calculator. I vividly remember when I was in grade 10, my school organized a scholarship test. Since I was among the top performers in the classroom, so I didn't practice much or didn't even bother to read the instructions for the test. Actually, I was in habit of using calculator from class 8 onwards, and I was very poor at mental mathematics. However, in the real exam, I was in great trouble because I was not permitted to carry calculator. Now, when I saw the mathematics section, I couldn't believe my eyes. There were dozens of questions and most of those were based on calculations, especially difficult multiplications or divisions of at least 3-digit numbers. I was having very tough time because every time I was solving these questions, it was taking me a long time to solve, and still I was not able to get the correct answers because my answers were not matching the given options, as most questions were MCQ based. I got extremely irritated because in 1 hour I couldn't even solve 15 questions, and this section badly affected my other 2 sections of English and Science because I was not left with much time to complete. As a result, I couldn't score well in the test. In contrast, my friends who had learned the tips and tricks and practiced mental mathematics were able to perform far better than me. It was more like a lesson for me not to be dependent on machines all the time, and that's the reason why afterwards I joined some sessions to improve my mental mathematics skills, and today I can handle most calculations orally. And that was the time when I was in a situation where I couldn't use calculator to solve a sum. And that's it. So if you wish, you can say that yes, you were able to solve it, or you can say like me that even by the end you couldn't do it, and that's the reason why you learned or understood the importance of mental mathematics. इंडिया ने तो दुनिया को ज़ीरो दिया है। आर्यभट्ट बहुत फेमस नाम है, हमें पता है। आप भी मेंटल मैथमेटिक्स सीखिए, काफ़ी अच्छी स्किल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है। एंड I wish you all the very best and do perform well in the examination. आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। और अगर आपको कोई भी नया क्यू कार्ड पता चलता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।
ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ, ਆਈ ਐਮ ਫਰੋਮ ਕੈਨੇਡਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਰਮਨਦੀਪ ਸਰ ਤੋਂ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਆ ਆਪਣੀ IELTS ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਥਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਊ ਕਾਰਡਸ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ YouTube ਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਆ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੂੰਗੀ, ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕ੍ਰੈਕ ਯੂਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਜੁਆਇਨ them।